I just want to know a brief idea about railway policing. Like we have mostly covered the normal district policing. अगर डिस्ट्रिक्ट को ना एक स्पीड दे दो 100 किलोमीटर पर आवर तो रेलवे पुलिस है. क्या बात. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड अ नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग इज कि हमारा एरिया थोड़ा लिमिटेड है. वी ऑपरेट इन रेलवे एरिया. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमिलर रोड इस तरफ है और आगे आप डीएन रोड है टाइम्स ऑफ इंडिया तक. ये पूरा जो कैंपस है इट इज़ अ रेलवे लैंड एंड दिस लैंड इज़ बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईदर गुड्स और पीपल. तो जो पूरा रेलवे हद्दी है दैट इज़ आवर एरिया, दैट इज़ आवर jurisdiction and it is continuous. That is from CSMT up to Kasara, from CSMT up to Khopoli, from CSMT up to Panvel and from Church Gate up to Bodli which is Gujarat border station. और आप उनके इंटरलिंकिंग जितने लाइन्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ इंटरलिंकिंग लाइन बिटवीन वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे स्टार्टिंग फ्रॉम वसई रोड से लेके यहाँ तक आएगा. अभी आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो भी हमारे हद्दी में है. उसमें क्या होगा सर? जो फ्रेट के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं ना. रेलवे लाइन होगी जिस पे सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेगी, डबल डेकर भी चल सकती है. तो एंड दे विल बी लिंकिंग इट टू JNPT ऑल्सो. फिर आपको मालूम भिवंडी में बहुत सारा जो है वो स्टोरेजेस के गोडाउन्स हैं. तो CNF जो एजेंसी होती है मोस्टली भिवंडी में होती है. तो ये जो रोड है उधर से जाएगा. तो एसेंशियली हमारा एरिया अगर आप लेके जाएंगे तो इट इज़ लाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट. इफ़ आई टेक फ्रॉम चर्च गेट टू गुजरात और उसका विड्थ मैं जोड़ लूँ तो दैट वेज. सेकंड थिंग इज़ डेंसिटी. रोड्स आप देखेंगे तो रोड्स में सिंगल रोड होते हैं या डबल रोड होता है. कुछ 2 लेन होगा, कुछ 4 लेन होगा. बहुत कम रोड 6 लेन होते हैं. हमारे पास 8 लेन ट्रैक है. तो आप समझ सकते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितनी ट्रेन चल रही है. 4 तो आप सबअर्बन ट्रेन ले लीजिए, दैट इज़ स्लो अप स्लो डाउन, फास्ट अप फास्ट डाउन. 4 वो हो गया. देन मेल एक्सप्रेस अप मेल एक्सप्रेस डाउन. 6 ट्रैक्स पे एक साथ ट्रेन चलती है यहाँ पे. एंड यू कैन सी दोज थिंग्स एट मेनी प्लेसेस. अब इशू क्या है कि ये जो एरिया है इस एरिया में क्या चीज़ होती है. जैसे आप ये समझ लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेशलिटी होती है. हमारी स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास हर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मूविंग. ट्रेन पे लोग बैठ गए, आदमी जा रहा है. तो हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अ मूविंग पॉपुलेशन. और मोस्ट ऑफ हमारा क्राइम जो होता है वो भी ट्रेन में होता है. तो हमारे पास विक्टिम और हमारे पास असिलेंट दोनों मोबाइल है. अब मोबाइल होने की वजह से इसके पिकुलर प्रॉब्लम्स आते हैं. एक तो आप लेवल देख लीजिए कि इस स्टेट में सिर्फ मुंबई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 13-14 मिलियन है. मतलब अगर हम नंबर 2 जोड़े तो नंबर 2 पर रेलवे आएगा, क्योंकि हम रोज़ 70 से 80 लाख लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं. हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर भी नहीं है कि थाने सिटी में ना न्यू बॉम्बे सिटी में ये 25-30 लाख के आसपास पॉपुलेशन है. वी आर हैंडलिंग 70 to 80 लाख पीपल पर डे. तो एक है. दूसरा क्या होता है कि बाकी जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग स्टैटिक होते हैं. कंप्लेनेंट रुक जाता है, एक्सीडेंट हो गया आपके गाड़ी का, या आपका पर्स किसी ने मार लिया, आपको किसी ने रॉब कर लिया, तो आप रुक जाओगे, आप लोगों को बोलोगे, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओगे. आप आधा 1 किलोमीटर के एरिया में ही मूव करोगे. मेरे यहाँ क्राइम होगा, हो सकता है अगले 2 घंटे में जो है वो मुंबई क्या वो थाने से भी बाहर चला जाए, वो वसई विरार पहुँच जाए आदमी. तो मेरा चैलेंज बहुत डिफरेंट है. अच्छा, किसी को पुलिस मदद की ज़रूरत है, उसके साथ कुछ हो गया, कुछ तकलीफ़ हो गई, सामान चोरी हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, कुछ थ्रेट है उसको, वो अगर हमको कॉल करते हैं, समझो अभी वो मुंबई सेंट्रल पे हैं, हमको रिस्पॉन्ड करते करते हो सकता है वो दादर पहुंच जाए, विच इज़ ओनली 5-7 मिनट्स फ्रॉम मुंबई सेंट्रल. तो क्या होता है कि मैं मुंबई सेंट्रल का आदमी भेज के उसको मदद नहीं करवा पाऊँगा. आई हैव टू प्लान इट कि अच्छा मेरा नेक्स्ट कौन है, मेरा नेक्स्ट कौन है, उसकी लोकेशन मुझे ट्रैक करनी पड़ेगी, मुझे उस जगह पे मदद देनी पड़ेगी. उस मदद में भी क्या होगा कि वो कौन से ट्रैक पे है, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे आदमी करना पड़ेगा. फिर उस ट्रैक में भी वो कौन से बोगी में है, तो उस बोगी पे जाना पड़ेगा. तो हमारा चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर्स.
और दूसरा क्या है कि इतना क्राउडिंग सिटी में कहीं नहीं होता है अनलेस यू हैव अ वेरी बिग प्रोसेशन। हमारे यहाँ जो क्राउडिंग है वो पीक आवर में किसी भी स्टेशन में कई हज़ार लोग आपको मिल जाएंगे। स्मॉल एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कई हज़ार लोग मिल जाएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि CSMT पे या चर्च गेट पे पीक आवर में पर मिनट 1500 लोग या तो आते या जाते हैं। तो आप 10 मिनट अगर ट्रैफिक रोक दोगे तो 15,000 आदमी आपको बाहर रोड पे मिलेगा। सो इट इज़ दिस वे कि इतना चैलेंज है। और क्या कि अगर आप ट्रेन में पीक आवर्स में चलते हैं तो आप देखो आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा क्राउडेड है। तो क्राउड की अपनी एक ये कहिए कि उसकी कंसिक्वेंसेस होती हैं। क्राउड में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान सर्वाइवल पर रहता है कि मैं किसी तरह पहुंच जाऊं। तो आपका पर्स मारा जा सकता है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, आपका मंगलसूत्र छीना जा सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और चूँकि ट्रेन मूविंग, आदमी कूद के भाग गया तो आप उसके पीछे कूद के उसको पीछा नहीं करोगे, क्योंकि आपको किसी मीटिंग में जाना है, आपको ऑफिस पहुंचना है, आपको काम पे जाना है, तो आपकी डिफ़िकल्टी डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ हो जाती है ये हमारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर कहीं पे भी कोई अटैक हो जाता है एंटी सोशल से, टेररिस्ट से, तो बाकी जगहों पे क्राउड कम होने के कारण लिमिटेड है वहाँ पे। और अगर किसी शहर में एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उस जगह की रोड ब्लॉक हो गई, तो आप दूसरा कोई अल्टरनेटिव रोड लेके जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है। मेरे अगर ट्रैक पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे बोगी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो ना सिर्फ कि वो पूरी की पूरी सर्विस डिस्टर्ब हो जाएगी, बल्कि वो गिरेगा दूसरे ट्रैक पे, वो भी बंद हो जाएगा। फिर रेलवे ट्रैक हर जगह पे एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको स्टेशन से होकर जाना पड़ेगा। तो आपको एम्बुलेंसेस ले जाना, आपको मदद पहुंचाना, इवैक्यूएट करना, हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सारी चीज़ें आर डबली डिफ़िकल्ट। फिर क्या होता है कि इलीगल ट्रैक क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हर साल 3-3,500 डेथ तो हमारी ट्रैक क्रॉसिंग से हो जाती है। लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, नीचे चले जाते हैं, बीमार होते हैं। तो वी हैव अराउंड से 3-4,000 डेथ्स इन आवर प्रेमाइसेस। तो ये एक मेजर अपना प्रॉब्लम है। देन वी हैव विटनेस टेरर अटैक 26/11 में, and we have iconic UNESCO World Heritage site in our campus. So what is happening is to maintain public order, to control crime, to detect crime, to ensure कि no stampede takes place, to ensure कि no terror attack takes place, to ensure that no law and order situation comes up। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बाहर से कोई रीज़न लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रेन अगर आधे घंटे लेट हो गई ना, तो लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, पीपल विल बिकम वेरी एजिटेटेड, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें छूट रही हैं उससे। यू विल मार्क्ड एब्सेंट इन योर ऑफिस, यू विल हैव अ सैलरी कट, यू विल गेट सम स्कोल्डिंग, तुम्हारी मीटिंग रीशेड्यूल होनी पड़ेगी, कई बार दुकानें बंद हो जाएंगी, कभी बहुत सारी चीज़ें, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, टाइम से नहीं पहुंचोगे, तो लोगों में एजिटेशन भी होता है। देन हमारा दूसरा इशू क्या है कि बिकॉज ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं, मुंबई इज़ द टर्मिनस, यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस में लोग सो जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं सुबह में, आँख खुलती है, पता लगा सामान गायब है। तो क्राइम मे हैव टेकन प्लेस एल्सवेयर, बट रिपोर्टिंग मेरे पास है। सो आई हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड लोकेट कि कहाँ पे वो हुआ है। ऑल्सो देयर लॉट ऑफ गैंग्स विच ऑपरेट, स्पेशली वुमेन जो ज्वेलरी लेके चल रही हैं उनके साथ, या आपको कोई स्टूपिफाइंग सब्सटेंस खिला देगा, नशा की चीज़, आप सो जाओगे, आपको सामान लेके चला जाएगा, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलिसिट थिंग्स, लिकर भी ट्रांसपोर्ट होता है, गुटखा ट्रांसपोर्ट होता है, गोल्ड ट्रांसपोर्ट होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस बिकॉज इट इज़ द कमर्शियल हब ऑल्सो। सो माई challenges are multifaceted. One, it is related to crowd management. Second, it is related to terror threat management. Third, it is related to control of crime. Fourth, it is related to women security because a lot of women are traveling. अच्छा, बाकी जगह पे क्या होता है कि नाइट इज़ द टाइम ऑफ पीस, पीपल स्लीप, दे विल गेट अप एट 5:30-6 और सो, अनलेस यू आर अ वेरी रेगुलर जॉगर और समथिंग। मेरे पास ऐसा इशू नहीं है। मुझे अगर दादर मार्केट में अपनी सब्ज़ी या अपने अंडे या अपना सामान ले जाके बेचना है और मुझे पालघर से आना है, तो मुझे 3:30 की ट्रेन पकड़नी है। दैट मीन्स कि आई हैव टू बी इन स्टेशन एरिया बाई 3:15,
एंड इट इज़ मोस्टली वुमन हु आर कमिंग विद दीज वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स। तो मेरा वुमन सेफ्टी का इशू सुबह 3 बजे से स्टार्ट होता है, 1:40 में लास्ट लोकल जाती है, पीपल आर ट्रैवलिंग, वुमन आर ट्रैवलिंग, और बाई 2:30 और 3 मेरा दूसरा प्रॉब्लम फिर आ रहा है। एंड नेटवर्क मेरा इतना बड़ा है कि आई हैव टू बी प्रेजेंट एट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। सो वी हैव लॉट ऑफ दिस इशू, आई वुड से कि बड़ा चैलेंज है वुमेन सेफ्टी का, बिकॉज मोलेस्टेशन या रेप अगर हो जाए एंड दिस इज़ अ मीडिया कैपिटल, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस एंड वी विल इंश्योर कि हम ऐसे कोई चीज़ होने नहीं दें। फिर क्या हो जाता है कि लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं बाई ट्रेन। अब क्या होता है, सिटी में रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं उसका स्पिल ओवर कहाँ होगा, स्टेशन पे, क्योंकि ये मालूम है कि ये ट्रेन पकड़ के जाती है, ये जाता है, तो उस टाइम तो आदमी ने मिलना है ना। तो फिर जो झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो यहाँ आके होती हैं। तो घर में तो आप जा नहीं सकते, आपको रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि वो 8:40 की ट्रेन उसको मिलने वो पकड़ के जाती है या जाता है, तो बराबर आपको 8:35 में आदमी स्टेशन पे मिल जाएगा। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन अंदर बिग चैलेंज कि लॉट ऑफ किड्स दे रन अवे फ्रॉम देयर होम्स, ट्रेन पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। जब तो ट्रेन चल रही है वो चलते रहते हैं, जब ट्रेन रुक गई और आगे नहीं जाएगी तो कहाँ क्या होगा, दे हैव टू कम आउट। सो आई हैव लॉट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, 3,000-4,000 मिसिंग चिल्ड्रन हमको हर साल मिलते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू इंश्योर कि उनके पेरेंट्स इन्फॉर्म हो, वी हैव टू इंश्योर कि नोबडी ट्रैफिक्स देम एंड ऑल दैट। तो हम वो चीज़ करते हैं। देन ट्रेन इज़ वन कनेक्टर, तो अगर ड्रग्स भी आना है तो ट्रेन से आता है, गांजा आना है तो ट्रेन से आ जाएगा, बिकॉज ट्रेन में क्राउड की वजह से आपको एक काइंड ऑफ, आप ये कहिए कि फेसलेसनेस मिल जाती है। आप 1500 आदमी जाकर नहीं चेक करते हैं, आप बोगी में बैठ गए, 100-125 आदमी बोगी में है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू सी योर लगेज एंड बैगेज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। एंड क्या हो जाता है कि बिकॉज वी आर द वन एजेंसी विच आर ऑपरेटिंग राउंड द क्लॉक, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट चलते रहता है, तो जब क्राउड कम हो जाता है तो उस टाइम में क्राइम के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं या उसकी चांस बढ़ जाती है। सो वी हैव मर्डर्स, वी हैव अदर इश्यूज़ बहुत टाइम में, वी आवर्स में। देन द इंटायर ट्रैक एरिया इज़ आवर्स। अब मुंबई में बैठने की जगह नहीं होती तो गर्दुल्ले कहाँ जाएंगे, तो ट्रैक में बैठ जाते हैं, ट्रैक के बाजू में बैठ जाते हैं। वी हैव लॉट ऑफ डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर, आप देखते जाओ, तो डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर आइडियल फॉर क्रिमिनल्स, वो बैठ करके अपना जो भी पार्टी करना है, कुछ करना है, तो वी हैव टू इंश्योर कि दैट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग प्लेस। सो एंड देन वी हैव लॉट ऑफ कनेक्टर्स, फुट ओवर ब्रिजेस कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर अक्रॉस द रेलवे लाइन्स, उसका कनेक्टर हमारे पास आता है। वी हैव अंडर पासेस, सबवेज, तो आप रात में तो डेजोलेट हो जाता है ना, टू इंश्योर कि वहाँ नॉनसेंस नहीं हो, इज अ चैलेंज। तो ऑल इन ऑल इफ यू सी ना, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि दे हैव टिपिकल टाइप ऑफ थिंग्स एंड जनरली 8-10 आवर्स आर पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट इन देयर होम, देयर इन देयर होम्स, देयर स्लीपिंग, देयर ट्रस्टिंग, तो प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम राउंड द क्लॉक है। सो और दूसरा क्या, कोई भी एजुकेशन मुंबई सिटी में होगा तो किधर से लोग आएंगे, विदर्भ से आना तो गाड़ी करके थोड़ी आएगा, मराठवाड़ा से आना तो गाड़ी करके थोड़े आएगा, ही विल कम बाई ट्रेन। तो देन आई विल गेट एन इंटीमेशन कि साहब वो आ रहा है, उसको चेक करो आप। एंड रेलवे इटसेल्फ इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड आप समझिए कि 50-60 हज़ार लोग यहाँ पे काम करते हैं। वी हैव गॉट 2 GM ऑफिसेस, 2 DRM ऑफिसेस, तो उनके अपने वेजिटेशन चलते रहते हैं। तो समटाइम फ्लैश स्ट्राइक टेक्स प्लेस, मोटरमैन काम छोड़ देगा, अब जो आदमी स्टेशन पर खड़ा है। So different kind of problems take place. So I think all in all it is quite an interesting organization to work, and this is one organization where you have lot of coordination with central government, क्योंकि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। स्टेट में जब हम काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो हमारा काम किससे पड़ता है, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, बट मोस्ट ऑफ मेरा काम जो है मुझे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से पड़ता है। सो दैट इज ऑल इन ऑल इफ यू सी ना, मतलब इज इंटरेस्टिंग थिंग टू वर्क, प्लेस टू वर्क। सर ये रहा लाइक आपकी पुलिसिंग, जो रेलवे पुलिसिंग है। Now if I talk about your profession, now it's been 20 years, 20 plus years. 25 years. 25 years. So in this 25 years, you have been to district, you have been now into railways, different variations में आपने काम किया है. If I talk about the perspective, mind perspective,
What do you think? Like how it has changed yourself? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमारे यहाँ जनरल टेंडेंसी क्या है कि मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव में काम करना चाहिए. एग्जीक्यूटिव में आप 2-3 चीज़ ही हैंडल करते हैं, या तो आप क्राइम हैंडल करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करते हैं. उसके बियॉन्ड ज़्यादा कुछ आपको काम नहीं पड़ता है. थोड़ा बहुत VIP विजिट हो जाएगा. फॉर्चुनेटली आई हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड मल्टीपल एक्सपोजर्स. आई हैव वर्कड इन एंटी नक्सल ऑपरेशन. तो एंटी नक्सल ऑपरेशन इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज एंटी इंसर्जेंसी. सेकेंड, आई हैव वर्कड इन आर्म्ड पुलिस यूनिट्स, SRPF जिसको हम कहते हैं. आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग इंडिया रिजर्व बटालियन, फर्स्ट वाला जो औरंगाबाद का है. उसका ट्रेनिंग मैंने पूरा किया है, उसकी हाउसिंग पूरी की है. इनफैक्ट उसका प्रोजेक्ट भी बनाने में आई वॉज देयर. आई वॉज वर्किंग एज कमांडेंट ग्रुप 11 एंड वर्किंग विद द IG मिस्टर अरूप पटनायक. सो आई हैव रेज्ड अ बटालियन. उसके बाद आई हैव वर्कड इन मुंबई सिटी फॉर लॉन्ग टाइम. बिफोर दैट आई वर्कड इन SP सिंधुदुर्ग विच इज़ अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट. तो कोस्टल सिक्योरिटी के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. I worked in district like Wardha, which is a very politically very sensitive, and this is a dry district where you cannot sell liquor but you can have liquor. It's a very different situation. So what happens when you ban sale and people are in need of that, so you will generate an illicit trade. So that was another major challenge. Then I have worked in Mumbai city for 8 years. I was Deputy Commissioner Port Zone, where I handled cases of piracy, where I have handled cases of ship collision, where I have handled a lot of consulates, because shipping is one agency in which ship may belong to one country, personnel may come from another country, the lessee may be in third country, the goods may have been taken from a fourth country, all those things. So very different kind of exposure. Then there is a lot of coordination with Shipping Corporation of India, DG Shipping, Maharashtra Maritime Board, then central agencies, because I told you we have handled Navy, Coast Guard, because all this piracy and those issues, and coastal security itself. Then I have worked in East region, which is having largest population of slum in Mumbai. You have Shivaji Nagar, you have Gondi, you have Mankhurd, you have Cheetah Camp, all slums. Then also in Bhandu, when Ghatkopar areas, and commonly the most sensitive area with a lot of caste conflict also. Then I have worked in traffic department of Mumbai police. So it's a very different kind of exposure. In fact, the city runs on traffic, either train or road. So I've seen that also. Then I have commanded the armed police of Mumbai city, which is called LA, local armed police, the strength of which is 14,000. So in 14,000 in army, you will have kind of 3-4 brigades, a major general or somebody will be hitting that. So as a DIG, additional commissioner, I have handled that. For a short period, I have worked as officiating MD of the Maharashtra State Security Corporation, which is a corporation. Then for a long period of time, I handled crime against weaker sections, women and children as the state head in the police headquarters, that is DG's office. So I was representing DG in almost all the conferences, all the hearings before the commissions and all that. And now I'm here. So when I see what I have done, so say I handled normal districts, I worked in anti-insurgency operations, I have handled coastal security, I was Deputy Commissioner Railways also, so I have handled railway security also, I have handled mega city policing, I have handled traffic management of a metropolis, I have headed a corporation, I have headed a department, and now I am heading this commissionerate. So my exposure is, say, public order management, different kind of security scenarios, traffic management, HR management, command and control. You see, so I've got a lot of different verticals actually where I've worked. So at some time people do feel कि यहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या रखा है, आपको इधर डाल दिया, आपको उधर डाल दिया. But down the line, when I see, had I not been having those exposures, probably as a person or as an officer, I wouldn't have learned so many things. Every place teaches you something, and every place actually contributes to your evolution as an officer, as a person.
provided you keep your mind open, which I have kept. So a lot of learning in the entire process, and therefore if I am put in any situation, I have certain experience, certain knowledge, certain information, certain exposure which comes or keeps me in good state in working there. So now it is easy for me to achieve coordination, to strike a dialogue, to get cooperation. Like here railways is kind of opaque organization, people do not know much, but we have got fantastic rapport with the DRMs, Central DRM Western, and his entire group of officers, the GM office and all those. Similarly in the state police also. And all in all, my purpose of serving people is that I should be a factor in reducing their problem, their stress, their unhappiness. I should be one who should wipe the tears from their eyes, bring them hope, to give them a sense of fulfillment that justice has been done to them, or at least I tried my best to provide them justice or take them on the path of justice. And I have treated them with fairness, I have treated them with courtesy, and as a human being also, when they go away, when I do not have this uniform, if they meet me, they would recognize he is the chap who was a humane person inside that uniform. So that is what my journey has been. Definitely. What are the most challenging, if like you remember as of now? You said all of the challenges. एक झटके में क्या याद है? Lot of things. Any one? Say, in anti-Naxal operation where you have encounters with Naxal, it's a different ball game altogether. You don't know whether you will survive or not. And then Where you posted, sir, that time? in district Gadchiroli and 120 kilometers away from Gadchiroli in a village called Aheri. And I was handling 20 police stations, and that was the hotbed of Naxalism. This is around 2001. So, and every day when you leave, you do not know whether you will be coming back. I had a small kid, small daughter, a year old at that point of time, and there it taught me that your value of life is as good as the life of the value of anybody else who are working with you, the constables, the driver, anybody. So you have to work as a team. Forget the identities, you have to work as a team and deliver. We have reached a police station just after an encounter with Naxals had concluded. I was additional SP, my SP, and they thought we are also Naxals. okay. And imagine what kind of situation would have been there. The despair, the fear, and all those things. Hundreds of rounds of ammunition has been fired from both the sides. Grenades have been launched. There in Gadchiroli, and especially in Aheri, when I was there, I mean, time and again I used to hear all these blasts on my wireless. Because if I am talking to a police station, encounter is going on, so you will get the sound of firing, you will get the sound of grenade, all the sounds are there. So you can actually very well imagine, yes, I am there. And then from here you have to have that map, mental map. Where is my position located? Is it vulnerable? Where are my people? What kind of position they are having? What kind of fire they are getting? How distant are these people? What can we do to catch hold of them? How can we thwart their attempt? And how can we ensure that our people are safe? And how can we take the other actions against them? So Naxalism is a very different ball game. And from there I went to Sindhudurg, which is a very different kind of cultural and social space. It's in Konkan, thick of the Konkan. The different kind of value system, very educated people, learned people, knowing law. But at the same time, they had their own culture and those things, moorings. So, in rest of the Maharashtra, normally the collector and SP are very sought after. But Konkan is a different ball game. You come down to on the ground, and what is kind of just professional rapport. What it is. But that taught me a lot of things. And then here working in say Vidarbha is a very different kind of thing. Wardha I had a different kind of challenge. Liquor is one. Then crime is also quite high. Then a lot of political influence here and there and this and that. So how do you come out
from the thick of challenges. There are a lot of difficulties there. Then I commanded a battalion here in Nagpur also, which is kind of Dvibhashik, Okay. Hindi and Marathi speaking people. A lot of North Indian in that group 4, which was originally CP and Virar, when that state existed before 1956, is that unit. So they taught me how to work and how to remain unaffected by caste equations, religious equations, language equations, and yet deliver. And then you come back to Mumbai. So Mumbai is a very different kind of space. Escalation is very fast. People are connected to who's who. If you do not listen to them, maybe in 10 minutes the matter will be escalated. And ramifications are very swift. If I am unable to say clear a road, probably I'll have jam 1 or 2 kilometers. If I am unable to tackle an issue, it will reach to my boss, my superiors immediately, and then nobody would like to be directed for something which you can actually do yourself. Then also here you cannot do any hanky-panky because the issues get reported very quickly. So you have to be very, very clear that you remain on the right path. I'm not saying the other places they will remain on the right path, but here the scrutiny is very, very close. The entire media is here. All your bosses are here. The entire state government sits here. So here scrutiny is very, very close. And therefore, if you want to survive, one, you have to be honest, effective, efficient, and capable of delivering the results. Fortunately, I have survived here. So probably. A last question. My question नहीं बोलूँगा. I want advice from your side. I'm also doing team building nowadays. I'm going to different states. Team में बहुत सारे लोग हो रहे हैं. I think you have done this a lot of years. What will be your tips? Like कभी-कभार होता है ना सर कि there are last moment challenges. You know that guy can do it better. But वो last 2 दिन से काम कर रहा है, उसको समझाना, इसको यहाँ से उठा के ये काम करवाना. What would be your tip to this? There are 2 basic challenges to human race. I'll start from there. One is ego, and second is attraction with opposite sex. Okay. Take care of both of them. Yeah. With examples, sir. Ego, like I founded an NGO for literary and cultural work. Okay. Yeah. So never ever I put my photograph on any of the posters. I've kept myself on background. I am probably the most studious worker. I'll lift chairs, I'll put down the mat, I'll broom also, I'll do anything which is needed at that point of time. And I'll treat everybody as equal. Yeah. That organization is not meant for my publicity, it is meant for a purpose. Yeah. Unity or cohesion through literature, understanding through literature, social harmony through literature or culture was our theme. So in that I have to keep my ego in check. Okay. And I am not going to take all the credit कि मैंने किया है. I will never take that credit. I'll say कि team ने किया है. I kept my ego in check and still keep. And I never put my poster. It is not my event. It is our event. Give due credit in front of people to all your teammates. So I'll call them on the stage. I'll announce their name. They have done fantastic work. I'm just one of their spokespersons. When we will sit and discuss, it will be a fair discussion. Everybody will be having opportunity to voice his assessment of the situation, including criticism. In fact, when we organize the event, then we sit down and we say कि इसमें मुझसे ये गलती हुई है. So everybody comes up कि साहब मुझसे ये हुआ. Then we resolve how not to do it, how not to repeat it. So one is this, and that is ego wala part. Second part is attraction, which is very natural. Ego is also very natural because you have achieved something in life, you have reached to a position, you have founded an organization. So it comes naturally, and people will actually try to put you there. So it is your job to remain grounded. Second and very important thing is that in a workplace we have all kind of people, opposite sexes are there, and we have to work as a team. You may have a personal relationship, but keep it outside. When we are working together, it should be a relationship based upon dignity, mutual respect, and all that, and never exploit the situation of anybody.
So you see, most of the organizations, these are the two problems that come up. So ये दो बेसिक challenges हैं. Human race को challenges है और आज से नहीं, day one से है. So that is. Sir, I think you hope the concept of doing this podcast, I think this is a different type of podcast. If you have any feedback, please you can share. You see, the very fact that you are trying to get a feel of the person is something unique, because other people will just come and take an interview, take few shots here and there, and then they will go away. So you just see one side of the personality. You do not see all the side of the personality. So you do not see the private or personal life of the person also, his routine, his preferences and all those things. Second is that your questions have been very candid, so you have elicited a lot of response which otherwise would have been probably, I would have refrained from speaking. Thirdly, I think when you give a kind of slice of life of somebody, then what happens that those who are seeing or listening to it, they think that they are also like us only. When I was a student and I used to see an officer's bungalow, I used to think कि ये कैसे लोग होंगे जो यहाँ रहते हैं और ये कैसे होंगे. When I met some of them, then I realized that they are normal people like us only. अपने ही जैसे लोग हैं सारे, वो कोई extraordinary नहीं होता है. It is your hard work, it is your dedication, it is your conviction, it is your faith that makes you different from others. So when those who will see this should realize this thing, that Kaisar Khalid is not an extraordinary guy. He is a very ordinary guy who had tenacity, who had this faith in himself, who had optimism and hope, and who never gave up. I have failed, I have fallen down, I have been broken, I have been bruised, I have been deceived. But despite that, I have not discontinued my journey. If you also continue on your journey, on your path, and that path should be the correct path, and very easy to identify a correct path. When you go to sleep, just close your eyes, think what you have done throughout the day, and just assess whether whatever you have done throughout the day is taking you to your destination or it is impeding your journey. If it is taking you to your destination, well and good, please continue. If it is impeding or halting your journey, then please refrain from doing that from tomorrow. And try to bring improvement into yourself through this introspection, through this assessment. You will not need gurus and other people. You will be your own guru. And please have an open mind. Please try to free yourself from bias. If somebody is listening, telling you something, listen and argue it out. And think and analyze. What he is saying, does it make sense? Is it helpful to me? And everybody has his own strengths and weaknesses. Does it suit you also? Then take a call. So I have not listened, I have paid the price for that. I have listened, I paid price for that also. So everything which is suitable to me will not be suitable to you. What you need to do is to assess yourself and see. I'll give an example. Throughout my education and student days, I never studied in night. By 11 I used to sleep. Yeah. My circadian rhythm is like this. I would sleep and get up at 5 or so, 5:30. Sometimes you get up late in the night, go to washroom. Then my hostel had rooms, and above the door there was a kind of glass, say 2 by 3 feet glass kind of thing, रोशनदान जिसको हम कहते हैं. So if anybody's room light is on, you can very well see that. So say it is 3:30 in the morning, and then you are going, अरे इसका लाइट जल रहा है, ये तो पढ़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ. Many times I got frustrated, so then I sat down and calculated my hours of work or hours of study. Then I realized कि भाई 10-12 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ इत्मीनान से, तो nothing doing, मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ. That routine is not suiting me. जो आदमी रात भर जागता है वो फिर 11-12 बजे तक सोया भी तो रहता है. I get up early in the morning, so my rhythm starts early. So whatever is suitable to you, please go by that. So that is what you need to do. Thank you so much, sir. It was a pleasure to have you today in the podcast. Thank you. Pleasure.